हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम एंड आई एम गुरमीत कौर। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ऑफ द पोम ब्रूक बाय लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। सो लेट्स बिगिन। First of all, the question here is the poet has used a number of words which indicate movement and sound. Make a list of these words from the poem and complete the web chart. तो इसमें बहुत सारे words ऐसे यूज हुए हैं जिसमें movement और sound जो है ब्रूक का हमें पढ़ने के लिए मिला है. So let's fill all these blanks. Here in the movement words Sally and Sparkle is already given. The others we have filled as travel, wind, flow and slip. और sound words हैं इसमें already given is bicker and the other words are murmur, fret, babble, chatter. Next one is a word or a combination of words whose sound seems to resemble the sound it denotes. For example, his, buzz, etc. is called onomatopoeia. From the words that you have filled in the blurbs above, point out these words. तो ऐसे कौन कौन से words हैं? वो है chatter है, murmur है, babble है और travel है. ये सारे words जो हैं वो onomatopoeic words हैं. The next question is the following is a flow chart showing the course of the brook. Can you fill in the blank spaces with the help of the phrases given below? तो यहाँ पे एक बॉक्स में बहुत सारे phrases दिए गए हैं जो कि आपको नीचे blanks में fill करने हैं. यहाँ पे जो question है उसमें सिर्फ दो जगह fill हो रखा है. If you can see in your book, it is the second one and the seventh one are already filled. Others you have to fill yourself. The first one here is the B part. You have to take from this box. B part को हम first part में डालेंगे because comes from the place where coots and herons live. तो यहीं से उसकी journey start हुई थी ब्रूक की. Then it's passed through valleys and towns and then the third one is A part passes under 50 bridges. Then the fourth part is the D crosses both fertile and fallow land. Fifth one is E passes lawns filled with flowers. Sixth one is E. Sorry, it's not E. It goes through wilder. Yes, it's E. Sorry, in the fifth one it's C. So in sixth goes through wilderness full of thorny bushes, and seventh one joins the river. Sixth one is on the basis of your understanding of the poem, answer the following questions by taking the correct choice. Now, the message of the poem is that the life of a brook is temporary, short-lived, eternal or momentary. तो वो है eternal, means never-ending, long-lasting. B part is the poet draws a parallelism between the journey of the brook with the life of a man, the death of a man, the difficulties in a man's life or the endless talking of human beings. It's the life of the man because बार-बार ब्रूक क्या कहता है कि जो man की life है वो क्या है? ट्रांजिटरी है, वो खत्म हो जाएगी जल्दी, लेकिन इट विल गो ऑन एंड इट इज गोइंग टू लिव फॉर एवर. तो वो अपनी लाइफ को जो है लाइफ ऑफ अ मैन से कंपेयर करता है ब्रूक. C part in the poem, the below mentioned line suggests that here and there are lusty trout and here and there are grayling. So the brook is a source of life, or people enjoy the brook, or fishes survive because of water, or the brook witness all kinds of scenes. The brook is a source of life here because उसमें fishes भी रहती हैं. D part here is select the option that matches the given word phrases with appropriate literary devices used by the poet. तो काफ़ी literary devices हमें poem में देखने को मिले थे, जैसे कि यहाँ पे alliteration के बारे में बताया, onomatopoeia है, inversion है और refrain है. तो इनकी डेफिनेशंस आपको दी गई हैं और इधर आपको लेफ्ट साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको बाद में जो ऑप्शंस होंगी उसके साथ इन्हें मैच करना है. तो यहाँ पर ये देखिए जो फर्स्ट वन हियर आई कैन से इज जो चैटर, बैबल और मर्मर है ये ओनोमेटोपिया के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, और मैन में कम एंड मैन में गो बट आई कैन गो ऑन फॉर एवर, इसमें रिफ्रेन भी है और अलिट्रेशन भी है. फेरी फोरलैंड विद बिलो वीट
फोमी फ्लेक, गोल्डन ग्रैबर में सब में एलिट्रेशन है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको आंसर जो है इनमें से चूज करना है। तो आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। ओके, now E part, the first person narration of the Brook allows the reader to appreciate Tennyson's use of symbol, or realize the ultimate goal of the Brook, or experience the soothing effect of the sound of water, or understand the Brook's experience as a living organism. तो इसमें जो first person narration है वो क्या करती है, that makes us understand the Brook's experience as a living organism. 6 का B part है, read the given extract and answer the questions that follow by selecting the correct options. The poet has used the pronoun I to refer to the brook and thus employed a literary device in his depiction. Choose the option that use the same literary device as used in the first line. देखिए I जो यहाँ पे यूज है, इसमें जो literary device है वो है personification का, ठीक है। कोई एक नॉन लिविंग थिंग जो वो एक लिविंग थिंग में उसको कन्वर्ट करके शो किया जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाती है, राइट। तो अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन को ही हमने ये नीचे के ऑप्शंस में ढूंढना है। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉटमलेस ओशन वॉज डिवाइन, तो इसमें कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है। द एंग्री वॉल्स इकोड हिज फ्यूरी, अब वॉल्स कभी एंग्री हो सकती हैं, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, उनको भी गुस्सा आ रहा है, लाइक ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। अ मदर इज लाइक अ लायनेस प्रोटेक्टिंग हर कब्स, तो इसमें कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है। आई फेल द पावर ऑफ द गशिंग स्ट्रीम, आई फेल द पावर ऑफ द गशिंग स्ट्रीम, तो इसमें जो है वो पर्सोनिफिकेशन आएगा, द एंग्री वॉज इक्वल्ड हिज फ्यूरी में। The brook seems to be fretting in the given stanza. This verse has been used by the poet to depict the dash of the flowing brook. अब वो यहाँ पे थोड़ा सा worried है, थोड़ा सा anxious है. Brook is fretting because बहुत सारे curves से उसे निकलना पड़ रहा है. तो this shows its silence according to me. The B part here is, I linger by my shingly bars, I loiter round my cresses, and out again I curve and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. The first part here is, choose the option that includes words that best describe the characteristics of the brook as revealed in the given extract. तो इसमें उसको उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, वो शिंगले बार्स में से निकल रहा है, लॉइटर है मीन्स वो साइलेंट है, लिंगर कर रहा है, साइलेंटली जा रही है, ब्रूक एंड राउंड बाय क्रेसेस एंड आउट अगेन एंड कर्व एंड फ्लो, फिर से वो वहाँ से निकलती है, कर्व्स में जाती है टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फिर से वही बात रिपीट हो रही है, मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, यस इट इज़ नेवर एंडिंग, जो ब्रूक है वो नेवर एंडिंग है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो देखिए सारी में ही दिख रहा है, तो इट इज देयर। साइलेंट है, यस इट इज साइलेंट हेयर बिकॉज वो यहाँ पर लिंगर और लॉइटर जैसे वर्ड्स यूज हुए हैं। नेक्स्ट वन इज, द थर्ड वन इज ट्विस्टेड, हाँ वो उसमें कर्व्स में भी निकलना पड़ रहा है। अनबाउंड है मीन्स नॉट बाउंड है या टाइड अप है। और द फिफ्थ वन इज इंटरप्टेड है या डिसकॉन्टिन्यूड, टू बी डिसकॉन्टिन्यूड, ओके, या टू ब्रेक इन एक्शन, तो ऐसा तो नहीं हो रहा बिकॉज हमने पहले ही कहा है कि वो परपेचुअल है, वो नेवर एंडिंग है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स सी पार्ट 1, 2 and 3 आर द राइट आंसर्स। द लाइन द लाइन मैन में कम एंड मैन में गो, ठीक है, ये क्या बताती है, इट मार्क्स द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रूक्स लाइफ एज इट गोज थ्रू इट्स जर्नी, नो हाईलाइट्स द एटर्नल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ एज अपोज टू इट्स ओन, नहीं, एंड कंट्रास्ट द एटर्नल नेचर ऑफ ब्रूक्स अगेंस्ट शॉर्ट लिव्ड ह्यूमन लाइफ स्पैन, और हाईलाइट्स द एटर्नल स्टोरी ऑफ मैन दैट द ब्रूक केम अक्रॉस ड्यूरिंग इट्स जर्नी। So contrast the eternal nature of brook against short-lived human life span. What does the word linger and loiter shows about the brook? Its continuity, its slow movement, its powerful force और its ultimate purpose. देखिए linger और loiter का क्या मतलब होता है, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि लिंगर का मतलब होता है टू स्टे और रिमेन इन अ प्लेस, ठीक है, मतलब टू बी स्लो, हल्का सा स्लो हो जाना, और लॉइटर का मतलब होता है आइडल स्टॉप्स, जैसे रुक रुक के धीरे धीरे जाना। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स स्लो मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर आकर जो है ब्रूक स्लो हो गई है,
That is why it is a slow movement. Seventh part is answer the following questions. यहाँ पर around 8 questions are there which we are going to discuss. Number A part is why does the brook sparkle? A brook sparkle कर रही है क्यों? The brook sparkles when the sunlight and the rays fall on its watery surface. जब धूप गिर रही है उसके पानी पे, उसके सरफेस पे, तो क्या हो रहा है? The watery surface acts as a medium and reflect the sun rays producing a sparkling effect. तो वहां से एक sparkling effect देखने के लिए मिल रहा है. Bicker means to quarrel. Why does the poet use this word here? Bicker means a noisy discussion, है ना, या फिर कोई argument होना. So the poet used the word bicker to describe the noisy flow of the brook because it flows through the valley, bickers down a valley, through the valley, as it sounds like quarrel. So that is why this word has been used. Now, why has the word chatter been repeated in the poem? ये word को काफी repeat किया गया, chatter, chatter. The word chatter has been repeated in the poem because it represents the sound frequently made by the flowing brook. It seems that the brook talks about its journey that it has traveled throughout in a lively mood. D part. I wend about and in and out. What kind of a picture does this line create in your mind? So the brook does not flow in a straight line, but veers and twists itself along its way. So it creates a picture of flowing waters of the brook resembling a maze or whirlpool. तो वो सीधी लाइन में तो नहीं चल रही है, लेकिन it is sometimes twisted, sometimes sudden change of direction is there. तो veers का मतलब होता है sudden change of direction. This is for your reference. What does the poet want to convey by using the word steal and slide? By using the word steal and slide, the poet refers to smooth and noiseless movement of the brook. I make the netted sunbeam dance. What does the netted sunbeam means and how does it dance? The sun rays filtering through the leaves and bushes makes a net-like pattern on shallow water pools. They are reflected on the surface of water and appears to be dancing as the water flows. तो ये जो है धूप जो है निकल रही है पत्तों में से, बुशेस में से, और उनकी जो शेडो पड़ रही है उसके सरफेस ऑफ वाटर पे, तो उससे इस तरह का एक नेटेड पैटर्न बन रहा है, और जब पानी मूव कर रहा है तो मतलब it appears to be dancing as the water flows. What is a refrain in a poem and what effect does it create? देखिए refrain का मतलब होता है a word या फिर line या फिर phrase that is repeated within the lines or stanzas of the poem itself. तो देखिए इन लाइनों को रिपीट किया गया है. For men may come, men may go, but I go on forever. So this is a refrain here. Repetition of the refrain emphasizes the transitory nature of men and the eternal nature of the brook. Why has the poet used the word brimming in the line? To join the brimming river. Brimming means full to the brim or top. It creates an impression in our mind of the picture of a big river, abundantly filled with water. It creates a picture of immense volume and abundance. तो इस तरह से brimming का मतलब क्या होता है? Brim मतलब to means to be the to full to the brim or top. Identify the rhyme scheme of the poem The Brook. See, the rhyme scheme is A, B, C, D, and so on. The Brook by Alfred Lord Tennyson is a 13-stanza ballad poem that is separated into sets of 4 lines known as quatrains. These quatrains follow a simple rhyme scheme of A, B, C, D, changing end sounds from stanza to stanza. 10th one. The poem is full of images that come alive. Through skillful use of words, describe any 2 images that appeal to you the most, quoting the lines from the poem. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जहाँ पे लगता है कि बिल्कुल it has come alive.
है ना, बिकॉज उसने पोएट ने ऐसे स्किलफुल वर्ड्स को यूज किया. द फर्स्ट विविड इमेज क्रिएटेड बाय द पोएम इज दैट ऑफ द ब्रूक फ्लोइंग थ्रू हिल्स एंड वैलीज अंडर द ब्रिजेस एंड बाय द विलेजेस. By 30 hills I hurry down or slips between the ridges, by 20 thops a little tongue. तो इस तरह से सेकेंड वन आप ले सकते हैं. half a hundred bridges I murmur under moon and star in brambly wilderness. So the line above creates a beautiful image. A brook flowing sweetly and calmly at night under the stars and the moon. Its soothing sound echoes and feeling like it's murmuring. It flows into the wilderness, spreading greenery around. आप अपने according और भी कोई lines ले सकते हैं and you can explain it according to yourself. 11th one is the brook appears to be a symbol for life. Pick out examples of parallelism between human life and the brook from the poem. See, the brook appears to be a symbol for life, which becomes the central theme of the poem. Various instances that can be seen in the poem which draw parallel between brook and life. When the brook comes out from the mountains, its movement is very noisy and quick as it is in full vigor, and it is in a hurry to reach its destination. Similarly, man in his youth is very energetic, lively, enthusiastic and full of vigor. तो इस तरह से ये comparison बिल्कुल सही बैठता है. So when the brook comes closer to the river, its movement becomes slow and smooth, which can be compared to the man in his old age, who becomes very calm and gentle. क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ every person changes और ब्रूक भी यहाँ पर बदल गया है. In the early phase of Brook's life, it has a very fast motion and it overcomes all the obstacles, stones, pebbles in its way. This nature of Brook can be compared to man in his youth, when he is enthusiastic and is ready to face all the challenges that comes in his way. Ab last one hai, during the course of Brook's journey, it takes a lot of things along with it, like blossom, silk, gravel and fish. In the same way, man even meets, accompanies and moves forwards in life with the people he meets. The journey of his life. तो इस तरह से ये जो comparison है वो बिल्कुल सही है. The last one is question number 12. This poem describes the journey of a stream from its place of origin to the river that it joins. है ना, तो वो एक कहाँ से वो चलती है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, किस river को वो stream join कर रही है. The poem has been written in the form of an autobiography where the Brook relates its experiences as it flows towards the river. In literature, such a device by which an inanimate object is made to appear as a living creature is called personification. So just as a brook has been personified in this poem, write a poem on an inanimate object, making it come alive. You could begin with a poem of 6 to 8 lines. The poem should have a message, maintain rhyme scheme, try and include similes, metaphors, alliterations, etc. to enhance the beauty of the poem. And you could write a poem on objects such as candle, tree, rock or a desert, etc. तो इस तरह से आपको एक poem लिखनी है 6 to 8 lines की, और जिसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको एक rhyme scheme maintain करनी है, आपको इसमें similes include करनी है, metaphors और alliterations, और इनमें से कोई भी टॉपिक के ऊपर आप लिख सकते हैं. Here I will make you understand कि simile क्या है, इसको आपने कैसे लिखना है. It is like says that simile says that one thing is like or is as, compare करना किसी को to the another thing. Like हम कहते हैं as quiet as a mouse, तो ये simile है. अब metaphor क्या है? Metaphor do not use the word like or as. इसमें आपने ये सब नहीं यूज करना in the comparison. Like time is money. हम ऐसे तो नहीं कहते टाइम इज लाइक मनी, नो, टाइम इज मनी, तो ये मेटाफोर है. लेकिन एज क्वाइट एज अ माउस ये सिमिली है. अब इसमें एग्जांपल जैसे आपने कैंडल के ऊपर लिखे हैं, आप कह सकते हैं लाइक कैंडल इज सेइंग और इट इज पर्सोनिफाइड हियर लाइक आई बर्न लाइक अ ग्लीमिंग पर्ल, तो लाइक अ ग्लीमिंग पर्ल, सो इट गिव्स द लाइट एज ब्राइट एज सन. तो इस तरह से आप अपनी पोएम को बना सकते हैं. दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. आई होप यू विल डू nicely. And with this our chapter is complete. Thank you so much. Like my video, kindly like, share and subscribe. Thank you so much.